Hi, morning everyone. Welcome once again to this place where we discuss the editorials of the one of the toughest newspaper of the country, that is Hindu. And let's begin the day. So, firstly, thanks a lot for watching. I was not expecting that so many people would watch a video from such an elderly person, but thank you so much. I think there's still place for wisdom in this country. So thanks a lot. And more importantly, thank you so much for the valuable feedback. And this is one advice I would like to give to all the students who are preparing for the competitive exam. And that always take feedback in a very very positive and constructive way. सकारात्मक रूप से आप जो भी feedback मिले उसको लें, because that's only will build up the foundations for improvement. That only will push you to improve. So some of the feedback which I got is that why only CLAT? So in a way, that's very right that English comprehension, editorial analysis, difficult words. No, these are part of most of the examinations, whether it is CLAT, whether it is Bank PO, SSC, CPOs, even UPSC has an element of comprehensions and English in part of as part of CSAT. And more importantly, English is part of any group discussion, interview, interaction. So I feel you're right. And so from now on, I'm not going to share only with the CLAT aspirants, but I'll include everyone. Then second feedback was, या दूसरा feedback जो था वो अगर हम इसको हिंदी और bilingual करें तो जो ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं. दैट्स ऑल्सो वेरी पॉजिटिव फीडबैक. इसलिए अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम इसको जो भी एडिटोरियल करेंगे उसको हम इंग्लिश में कवर करेंगे. देन डिस्प्ले डिफिकल्ट वर्ड, ये भी एक फीडबैक था कि जो भी डिफिकल्ट वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं अगर उनको हम स्क्रीन पे दिखा सकें और उनके मीनिंग्स. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस फीडबैक. ये लेके मैंने थोड़ा काम किया है, इसलिए इट टुक मी सम टाइम टू प्रिपेयर द स्लाइड्स एंड पुट इट इन माय प्रेजेंटेशंस. And then last advice was that look more into the camera. See, I'm not professional. वो मेरा पहला वीडियो था in terms of students. So honestly, I'm a little nervous. In fact, very nervous. But I'll try. So that's not really important whether I'm looking into the camera or not. But what I'm conveying, अगर वो आप तक पहुंच रहा है सही और आप उससे कुछ फायदा उठा सकते हैं. So that's more important than anything else. But nevertheless, thank you so much for this wonderful feedback. चलिए आगे चलते हैं. So there are two editorials like any other day. So on 13th also there are two editorials, but we'll take one at this time, the first one, because video thoda lamba ho jata hai. So I know attention span ki aajkal bahut problem hai. So I'll make different videos for different editorials. So the first editorial jo maine aaj pick kiya hai, that is risky premise, and it says that policymakers must simplify trade rules to boost exports. अब ये एडिटोरियल ऐसा दिखता है पेपर में. सो डेफिनेटली आई नो इट इज वेरी बोरिंग. पेपर में तो और भी ज्यादा बोरिंग लगता है. सो आई कैन अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी नो स्टूडेंट्स हैव इन अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं एंड कुछ पार्ट्स में ब्रेक करते हैं सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ सेंट्रल थीम क्या है इस एडिटोरियल का? दैट ADB, that is Asian Development Bank. I'm sure most of the students को पता है ये बैंक क्या है, और इसकी अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो definitely you can go on Google and search it. That's more of a static GK, तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा. If you need it, tell me, I can cover that also. But primarily आज सिर्फ editorial analysis पे focus करते हैं. So the ADB has come out with latest forecast for India's GDP, और जिस पे उन्होंने जो उनकी earlier prediction थी from 6.7 to 7 कर दिया है for the current fiscal, that is from April 24 to March 25. So in a way, that's a positive sign that the trust of the ADB is increasing on India's economy and India's GDP. और उसके reason क्या दिए हैं? उन्होंने कहा है that for increasing this forecast, the reason is that there is a robust public and private investment as because of the expectation in gradual improvement in consumer demand, especially in the rural economy recovers. So इस forecast को बढ़ाने के पीछे उन्हें लगता है कि जो हमारी country का public and private investment है वो robust रहने वाला है, and हमारी जो rural economy की consumer demand है वो recover करेगी. Regional multilateral lender, that means ADB here.
has also projected that India's economy would expand by 7.2% in fiscal 25-26. यानी अगले अगले जो अगले fiscal year में, that is 25-26 में, from 7 it will become 7.2. So that in a way is a very positive sentiment, a very positive forecast, and that augurs well for our country. नाउ जो एडीबी का लेटेस्ट ग्रोथ फोरकास्ट है, लेकिन ये अभी भी हमारी जो एनएसओ है अपनी कंट्री की, उसकी जो फोरकास्ट है उससे बहुत काफी कम है. दैट मींस इंडियाज एनएसओ प्रोजेक्शन वो 7.6%, उसके कंपैरिजन में इट इज 7. बट प्लीज डोंट गेट इमोशनल कि हमारी अपनी कंट्री की जो ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो 7.6 बोल रहा है. हाउ डू दे से दैट नो इट विल बी 7? सो दीज आर जस्ट फैक्ट्स. These are numbers given by two different bodies. So my advice would be to just focus on the numbers, and don't get emotional about which agency has given what numbers. You have to remember that you are a student, and for you only data is important. Now last year expansion जो थी, वो भी एडीपी का कहना है कि it was because of the strong investment by the government, but consumer side पे जो demand थी वो muted थी, यानी it was slow, not that strong. Some other aspects of the editorial is that ADP ने लेकिन caution किया है that its forecast could be proven wrong because of various global risk. और वो global risk क्या है? Sharp rise in the oil prices, which we are seeing, and prolonged high interest rate in the West, primarily US. So US के interest rate अगर high होते हैं और global oil prices अगर high होते हैं, तो then this forecast may come down. And it is also estimated that Indian economy would be the most affected in Asia by the interest rate, higher interest rate in the West, particularly in the US. So that's also a caution from ADB. And another aspects highlighted by ADB is that though government's capital expenditure has been very, very strong, and it continues to grow or projected to grow, but the private sector somehow has not been able to match the energy of the government sector in terms of getting into the infrastructure spending or capital expenditure. So these are some of the risks highlighted by ADB in relation to this forecast. Now, इससे पहले का जो डेटा था वो एक्चुअली फैक्चुअल था सिर्फ, राइट? किसी भी एडिटोरियल का आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जहां पे हिंदू की एडिटोरियल टीम उस फैक्चुअल डेटा को या उस कॉन्टेक्स्ट को क्रिटिकली इवैल्यूएट करती है. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज एज ए स्टूडेंट facts and data तो आपको पता है, that's okay, but more importantly, are you able to analyze critically whatever data context topic is given? Because exam में examiner mostly आपसे यही test करने वाला है. So this is quite an important part of the editorial analysis. So the Hindu's editorial team's criticism of ADB's forecast is that एज पर देम उनका कहना है कि एडीबी ने रिपोर्ट तो दी है, बट उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दिया है, विच इज integrity of the India's national income data. That means whether the data presented by NSO or any of the Indian agencies, whether the data is correct, can we take that data on face value? Is there any sanctity to that data? क्या हम उस डेटा पे विश्वास कर सकते हैं? Because we know there are instances जहाँ पे डेटा बहुत inflated आता है, and you know any organization depending on the circumstances उस डेटा के साथ play करता है. Then the team has also raised concern about the heavy influence of government's tax receipts, यानी GST का impact on GDP. Of late, पिछले कुछ quarters में और महीनों में GST collection has gone very up. So that is not a true reflection of the growth of the economy. So that's what they've highlighted. Then structural reforms इतने significant नहीं हुए हैं COVID के time से. That also an element which the team has highlighted. Then गवर्नमेंट ने जो वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर रिपोर्ट किए हैं, उस पे भी कहीं ना कहीं जो टीम है वो उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट कर रही है कि डेटा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है बट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं है. सो दे आर लिटिल स्केप्टिकल ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ द डेटा. देन वो एडीपी एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो अजम्पशन है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग लौटेगी भारत में रूरल एरियाज में, उस पे भी वो डाउट करते हैं थोड़ा, बिकॉज उनका कहना है
कि जो हमारी सेविंग्स है वो ऑलरेडी इतनी स्ट्रेच्ड है, तो अगर सेविंग पहले ही कम है तो आई डोंट नो हाउ विल द रूरल डिमांड विल कम बैक। और इसके लिए उन्होंने एग्जांपल दिया है दैट देयर इज अ ग्लोबल कंट्री रिस्क रिसर्च एजेंसी बीएमआई, और उनके हिसाब से जो हमारी कंजम्पशन स्पेंडिंग है वो हाउस होल्ड की वो ऑलरेडी स्टेच्ड है। इनफैक्ट इट इज नियर ऑल टाइम लो। So these were some of the aspects which the editorial team has questioned or has raised their concerns about. अब वो क्या suggest करते हैं that what should the government do, right? Based on the ADB report and based on their criticism that सेंटर को यानी प्रेजेंट डे गवर्नमेंट को एडीपी की जो सजेशंस हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, और उसके हिसाब से उन्हें लार्ज स्केल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं बनाने चाहिए, जहां से नो पॉलिसी एक्सपोर्ट्स को एग्जीक्यूट करना आसान हो, एंड सच क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वुड लीड टू बूस्टिंग ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स। सो दैट इज वन। सो ग्लोबल मर्चेंडाइज का जो ट्रेड है उसका जो रिस्क है उसके बारे में भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। देन जो एक्सट्रीमली वोलेटाइल सिचुएशन है वेस्ट एशिया में, वी नो दैट ईरान, इजराइल, Syria, uh, Lebanon, right? So we know what the current situation is, and जो हमारा shipping route है through Red Sea, that's also not going through a good phase. So based on these risks, I know the editorialism suggests that the government should focus on creating special economic zones, and then in turn boost and then in turn boost the exports. Also, they are advising that we should, our country should integrate better with the global supply chains, and we should improve our logistic infrastructure post haste, means without any delay. So primarily, this was the gist, then critical analysis of the team and what the editorial team is suggesting. Now, an important part of the editorial analysis, let's have a look at the difficult words, यानी difficult जो भी इसमें मुश्किल words हैं उन पे देखते हैं, because इनके जाने बिना आप पूरे editorial के context को भी नहीं समझ पाएंगे ठीक से। So इस editorial का topic ही था risk premise. So premise का मतलब होता है आधार, thesis, theory, basis, assumption, यानी जिस आधार पे आप किसी चीज का निर्णय कर रहे हैं या किसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, जिस अजम्पशन पे आप किसी चीज को फोकस कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, जिस बेसिस पे आप कुछ करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेमाइस। अगर वो सही नहीं है तो कहीं ना कहीं जो उसका आउटकम होगा वो भी सही नहीं होगा। दैट्स प्राइमरली दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिस्क प्रेमाइस, कि जो भी एडीबी ने दे तो दिया फोरकास्ट बट इट इज क्वाइट रिस्की। देन म्यूटेड आई मीन टेक्निकल टर्म में म्यूटेड तो होता है किसी का मुंह बंद कर देना, उसकी आवाज दबा देना, बट एडिटोरियल के कॉन्टेक्स्ट में दैट मींस कि ग्रोथ म्यूटेड है, यानी लोअर है, रिड्यूस्ड है, डिमिनिश्ड है, स्लो है। देन उसी के विपरीत है रॉबस्ट, मींस ग्रोथ अगर रॉबस्ट है दैट मींस इट इज हेल्दी ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। प्रोलॉन्ग मींस काफी लंबे समय तक, अगर आप मान लीजिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये अब आपकी प्रिपरेशन 3 महीने, 6 महीने या सालों साल चल रही है, सो इट वुड बिकम ए प्रोलॉन्ग्ड प्रिपरेशन, सो लेंदी, इलोंगेटेड, स्ट्रेच्ड। देन मल्टीलेटरल, जैसे यूनिलेटरल होता है, बायलेटरल होता है, वैसे ही मल्टीलेटरल मींस मोर देन 2-3 मल्टी पार्टी। सो एडीबी के रेफरेंस में इसका यूज किया गया दैट एशियन डेवलपमेंट बैंक किसी एक कंट्री का नहीं है, but many countries are involved in the formation and running of Asian Development Bank. Then conspicuously, word is conspicuous. अब इसका मतलब ये होता है कोई भी ऐसी चीज which is quite prominent, outstanding, जिसको आसानी से नोटिस किया जा सके, right? That's called conspicuous. Then अगला वर्ड है undermined, यानी किसी चीज को रिड्यूस करना, लेसन करना, डिमिनिश करना, उसको कम करना ना, उसकी अहमियत को कम करना, दैट इज कॉल्ड अंडरमाइंड। देन हीड मींस किसी की बात को ध्यान देना, नोटिस करना, पे अटेंशन, लिसन, नोटिस, दैट्स कॉल्ड हीड, ध्यान देना। पे हीड टू योर पेरेंट्स एडवाइस, पे हीड्स टू योर टीचर्स एडवाइसेस, राइट? पे हीड टू द ट्रैफिक रूल्स, दैट काइंड ऑफ थिंग। फ्लैग्ड, ये पिछले एडिटोरियल में भी था, यहाँ पे इसका मतलब लिटरल फ्लैग झंडे से नहीं है, यहाँ पे फ्लैग का मतलब है पॉइंट आउट करना, किसी चीज को हाईलाइट करना, किसी कंसर्न को रेज करना। रेड फ्लैग्स बोलते हैं जनरली, अगर कोई चीज गलत हो रही है तो रेज द फ्लैग, दैट मींस उसको हाईलाइट कीजिए। देन फिस्कल,
ये फिजिकल से थोड़ा सा डिफरेंट है, जो सिमिलर साउंडिंग है, बट इट्स फिजिकल, एंड इसका पूरा तात्पर्य या इसका रिलेशन जो है वो इकोनॉमिक से है, मॉनेटरी से है। सो फाइनेंशियल ईयर को हम फिजिकल ईयर भी बोलते हैं। एक कैलेंडर ईयर होता है लाइक जनवरी टू दिसंबर, वैसे ही फिजिकल ईयर होता है, दैट इज अप्रैल टू मार्च। सो दैट्स हाउ इट इज। इट्स मोर ऑफ, इट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक, मॉनेटरी, फाइनेंशियल एस्पेक्ट। वोलेटाइल यानी जो भी चीज स्टेबल ना हो, जिसको प्रिडिक्ट करना आसान ना हो, टेंस सिचुएशन हो, सो वोलेटाइल सिचुएशन है, दैट मीन्स इट इज अनस्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, टेंस्ड। देन पोस्ट हेस्ट, ये एडिटोरियल का लास्ट वर्ड भी है। पोस्ट हेस्ट का मतलब है एसएप, एज सुन एज पॉसिबल, देन वेरी क्विकली, विदाउट एनी डिले। So that was primarily the coverage of the editorial. Now, कुछ एक friendly or fatherly advice I can give to you is that इस एडिटोरियल को सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव में पढ़ें। आप किसी भी पॉलिटिकल उससे इन्फ्लुएंस ना हो। फॉर यू इट्स एन एग्जाम मटेरियल, राइट? सो यू आर अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी स्पोक्स पर्सन, सो आप इमोशनली अटैच ना हो उसके साथ कि अरे ये डेटा मेरी कंट्री के डेटा से कम कैसे हो गया, ज्यादा हो गया, इसने ऐसा कैसे बोला, नो हमारे पीएम के अगेंस्ट या हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इट इज नथिंग। इट फॉर यू, इट इज इंग्लिश एंड इट्स इंटरप्रिटेशन, और उसके एग्जाम में आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, दैट शुड बी ओनली फोकस ऑफ योर्स। देन जैसा मैंने पहले भी बोला था, फोकस ऑन एनालाइजिंग द एडिटोरियल, एंड उसमें जो भी डेटा है, कॉन्टेक्स्ट है, क्रिटिकल एनालिसिस है, उस पर ध्यान दीजिए। डोंट गेट इन्वॉल्व इमोशनली। सो that's all for today, and keep rocking. All the best. Be focused. Take one step at a time. Don't worry about long-term goals. One step at a time. Keep focusing. I mean, Dhoni also says that don't worry about results. Worrying about result doesn't gives you result. So just worry about what you can do today and what is in your control. So focus on controllable. With what is within your control. And lastly, those who are interested in knowing about me, this is a brief about me. I'm Prabhu, and a disclaimer: I'm not an expert on anything. And am I selling anything? Absolutely no. It's just my personal passion. Proud pop, yes. I'm a proud father, and this whole activity is to help my daughter and all other students who are preparing for any competitive exams. And why am I here? I'm here to help all students, share my learnings, and more importantly, learn more from young people like you. So please share your comments, thoughts, criticism also. Criticism is welcome. Then POP for me stands for Passion of Papa. And as far as my professional background, I'm a former Indian Army officer, and I'm a working senior corporate professional. Those who are interested in knowing more, you can always comment and we can always catch up. So with this, thank you so much. Have a very, very productive day. All the best. God bless you.